कैटेगरीज के स्प्लिट दिखाने के लिए पाई चार्ट इज द मोस्ट पॉपुलर चार्ट, बट मैं पाई चार्ट का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। हालांकि पाई चार्ट एक बहुत पॉपुलर चार्ट है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, बट मेरे को उसमें बहुत सारी कमियां लगती हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ी कमी है कि अगर आपकी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है तब मैं पाई चार्ट नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको पहले एक बार ये दिखाता हूँ कि हम पाई चार्ट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और मुझे वो क्यों नहीं पसंद है, और उसका ऑलराइट, सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ द पाई चार्ट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो आई हैव द टोटल ऑफ 3494 जितने भी मेरे क्वांटिटी सोल्ड है फॉर एवरी रीजन, एंड आई कैन एक्चुअली सी द स्प्लिट। सो साउथ अमेरिका इज एट द टॉप। अब ये जो मैंने ऑल्टरनेटिव बनाया है ये बहुत ही डायनामिक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरा एशिया का जो सेल है दैट बिकम्स 1000। सो एज सुन एज आई मेक इट 1000, जस्ट लुक एट दैट, एशिया इज कमिंग एट द टॉप। और प्लस आई कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट। जैसे कि इसका परसेंटेज इज 24%, एंड आई कैन सी दैट फॉर एशिया माई परसेंटेज हैज बिकम 27%, एंड आई कैन सी इट फ्रॉम द टॉप। प्लस इसमें मेरे को टोटल भी दिख रहा है। सो आई बिलीव दिस इज अ फेयर बिट ऑफ चार्ट टू। तो मुझे लगता है कि पाई चार्ट का ये एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है जो आपको एक पाई चार्ट में दिखता है। आई कैन सी द स्प्लिट ऑफ माई रीजन, आई कैन सी देयर एक्चुअल नंबर्स, और मेरे को यहाँ पे परसेंटेज भी दिख रहा है, प्लस मेरे को यहाँ पे उसका टोटल भी दिख रहा है। अभी अगर सेम चार्ट को मेरे को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लेट जस्ट क्रिएट दिस डेटा। मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग इनटू अ न्यू शीट। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे डेटा अपना पेस्ट कर दिया है। अभी आपने जैसे ही ये डेटा पेस्ट किया, द ईजिएस्ट थिंग फॉर यू टू क्रिएट अ पाई चार्ट, आप इसको सेलेक्ट करो, गो टू इंसर्ट, एंड वी कैन डू द पाई चार्ट। नाउ ऑब्वियसली पाई चार्ट इज वेरी इजी टू बिल्ड, दैट इज द रीजन वाई जनरली पीपल लाइक इट। बट जो मैंने अभी आपको ऑल्टरनेटिव दिखाया था दैट इज द बेस्ट वे। अब इसमें मेरे को क्यों चीज़ अच्छी नहीं लगती, अब सबसे पहले बाय लुकिंग एट द साइजेस इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू टेल वेदर माई साउथ अमेरिका इज बिगर और माई नॉर्थ अमेरिका इज बिगर। प्लस अगर आप ये देखोगे मेरे को नेविगेट करना भी बहुत मुश्किल है। एक्चुअली आई हैव टू पिक द कलर, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू कलर बिलोंग्स टू नॉर्थ अमेरिका एंड दिस लाइट ब्लू कलर बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका, राइट? Plus if I right click and add the data labels now, and let me also see the category। अगर मैं इसमें कैटेगरी भी ऐड करता हूँ देन ये एक्चुअली बहुत मेसी हो जाता है। देखो अब जैसे अफ्रीका बाहर आ चुका है, राइट? आई कैन एडजस्ट इट टू द राइट हैंड साइड, टॉप और राइट हैंड साइड, परफेक्ट। सो दिस इज द मेन रीजन कि मेरे को पाई चार्ट पसंद नहीं है। लेकिन अगर मेरे को इसी का ऑल्टरनेट बनाना है फॉर अ बार चार्ट, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था जो मेरे शीट 1 के ऊपर है और वो भी डायनामिक है, तो वो कैसे बनाएंगे? सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट। सी वो बेसिकली सिर्फ एक बार चार्ट है, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, मैं आपको जनरली एक ही चीज़ बताता हूँ कि कोई भी चार्ट बनाने के लिए ना हमको सबसे पहले उसका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो इसी चार्ट को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहले लेट मी क्रिएट दी रैंक निकाल लेता हूँ। नाउ इन एक्सेल टू क्रिएट अ रैंक वी हैव द फॉर्मूला इज इक्वल टू RANK। विल सेलेक्ट द रैंक। अब मेरे को 500 का नंबर निकालना है और मेरा रेफरेंस इज माई दिस रेंज। Now I will press F4 to add the dollar signs and close the bracket. Now it is telling me that my North America is at the 3rd rank. Now if I drag this formula, I will be getting 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I'm getting it. Okay. So now I have my rank function in here. Now let me add the index. अब मैं यहाँ पे manual index डाल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 and 6 to sort the number. अब यहाँ पे मेरे को चाहिए my sorted region. एनी आइडिया कि इसमें कौन सा फंक्शन लगेगा सो दैट बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स एंड रैंक आई कैन गेट माई रीजन? सो फर्स्ट इज साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे मेरे को साउथ अमेरिका चाहिए। सो इफ यू हैव गेस्ड इट, येस, इंडेक्स मैच इज द करेक्ट फंक्शन। सो दिस इज माई एरे, सो आई विल बी सिलेक्टिंग द एंटायर एरे, प्रेस F4 बिकॉज आई वॉन्ट टू लॉक इट। नाउ माई रो नंबर विल बी टू मैच माई इंडेक्स नंबर with the rank that I have created. Again, I will freeze it by F4, comma 0 for the exact match. And for the column, I will be typing column A because this will give me one number. So now I'm getting my South America. So let me drag it down. Next, I also want my sorted quantity sold. Sorted quantity. Again, I will be just dragging this formula to the right hand side and I will be getting my numbers. This is the reason of column. अगर आप यहाँ पे देखो column A1 that will give you 1 and column B1 will give you 2.
तो आउट ऑफ दिस इंडेक्स आई नीड 1 और 2. अगर आपको इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं आता देन यू कैन वॉच माई अनदर वीडियो जिसमें मैंने इंडेक्स को एक्सप्लेन किया है. सो यू कैन जस्ट वॉच दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ इंडेक्स मैच फंक्शन वर्क. नाउ नेक्स्ट आई नीड द रैंक. तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसका टोटल कर देता हूँ, सम, and now I have the total of my categories, which is 2952. Now if I want the percentage, so let's just say sorted percentage. Again simple formula is equal to 900 divided by my total, and I will freeze my total by pressing F4, and I can just convert that into percentage, and if I drag it down I am getting my exact value. Now to create that chart, again it's very simple. All you have to do is select your regions and then select your percentage. Now go to insert chart, click on column and then select 2D bar. There you go. So now सबसे पहले what do I need to do? अभी अगर आप देखोगे जो मेरे regions हैं, those regions are sorted in the ascending order. That means from smallest to largest, but I want to sort it in the reverse order. Now to do that, you select your axis, right click and click on format axis and then select categories in the reverse order. There you go. This is the first task that we wanted to do. Second, let's just adjust the formatting a little bit. So right click and click on format data series. From here, let's just decrease the gap width between them so that it looks good a little bit. Let's just decrease even further. This looks fine. Now I can change the color. Let's just change this color, go to format, change the shape fill. I like a bit darker shades, so I'll select this one. And now let's just also add the numbers. जैसे कि मेरे first sheet में था, if I go to sheet 1, you can see मेरे पास numbers भी हैं. Now how to add it? We'll right click and we'll select add data labels, and again we'll select this. We'll go to format data labels. We'll show it inside the base. We have to change the color to white. Select home and change the color to white so that we can see that. अभी ये मेरे को यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, बट डेफिनेटली आई डोंट वांट द परसेंटेज, क्योंकि मेरे को परसेंटेज तो ऊपर से भी दिख रही है. तो इसको चेंज कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल है. विल सेलेक्ट दिस और हम इसको फॉर्मूला ड्रिवन से करेंगे. आई हैव सिलेक्टेड दिस बॉक्स इज इक्वल टू, एंड इंस्टेड ऑफ 30% व्हाट डू आई नीड द एक्चुअल नंबर, सो आई विल सेलेक्ट दैट. अब ये मैं मैनुअल कर रहा हूँ, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है ये नंबर्स मेरे फॉर्मूला ड्रिवन है. सो जो भी मेरा G4, जो भी मेरे I4 सेल में है वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ एशिया को, तो अभी आप देखोगे मेरा एशिया टॉप पे आ गया. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द डायनामिक फॉर्मूला, और इसको हम लोग सॉर्टेड बार चार्ट भी बोल सकते हैं. सो लेट जस्ट रिपीट द प्रोसेस. 29 को भी आई विल सेलेक्ट माई 900, देन आई विल चेंज दिस 16% ऑल्सो टू 500. लेट जस्ट क्विकली डू फॉर द अदर्स. For Europe it's 200, and then for Africa I have 150. Okay, now इसमें एक छोटा सा कैच है. वो कैच ये है कि अगर मेरे दो रीजन्स की वैल्यू सेम है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज माई यूरोप इज ऑल्सो एट 500. So if I make it 500, now you see I am getting the error. The error क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है. So the first is 1000, second is 900 एंड थर्ड इज 500. नाउ अगर मेरे दोनों की दोनों वैल्यू सेम है तो इन दोनों को 3 रैंक मिल जाएगा. देन देयर विल बी नो 4, देयर विल बी डायरेक्टली 5th रैंक. इसका सॉल्यूशन क्या है? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक डायनामिक काउंटफ का फंक्शन सिखाया था जिससे आई कैन काउंट माई डुप्लीकेट रेंज. सो आई विल डू प्लस काउंटफ एंड दिस इज माई रेंज. अगर आपको ये नहीं पता देन अगेन प्लीज वॉच माई वीडियो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वॉट एम आई डूइंग. And my criteria is also C4, but I'll change this particular value to F4 so that I want this thing to be fixed. And then at last I will subtract it by -1. Now if I drag this formula down, now you can see that I am getting this 4. अब ये कैसे काम कर रहा है, इसके लिए आप मेरा यूनिक काउंटिव फंक्शन देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. अब आप देखो माई फंक्शंस आर वर्किंग फाइन. अब इसको टोटल कैसे ऐड करेंगे? सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई जस्ट एक्सपैंड दिस चार्ट अ लिटिल बिट, और इसका चार्ट एरिया को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं. एंड देन लेट मी इंसर्ट माई शेप. आई जस्ट ऐड अ शेप, अ लाइन इन हेयर, एंड देन आई विल ऑल्सो इंसर्ट माई टेक्स्ट बॉक्स.
और इस टेक्स्ट बॉक्स को भी I will add the formula. Select your text box, again go to formula bar and we'll select 3452 and hit enter. Now I can have it bold by selecting this. इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ. अगर आपको इसमें 1000 सेपरेटर्स भी ऐड करने हैं तो हमको बेसिकली जहाँ से हम इसको रेफर कर रहे हैं बस वहीं पे चेंज करना है. सो आई विल सेलेक्ट इट एंड आई विल क्लिक ऑन दिस. दिस इज अ 1000 सेपरेटर and I don't want my decimals. So now you can see that. Now let's just adjust it a little bit so that it looks like this. Now if you want a total, again you can do the same thing. You can write total in here and let's just copy paste this text box and I will add it just next to it. All I have to do now is change my formula by selecting this. 2 is equal to total. There you go. And again I can turn that bold. So now you can see that and we can adjust this. अब अपने को सिर्फ इसकी settings change करनी है. There you go. So this is the alternative bar chart or the sorted bar chart instead of a pie chart. Now if you compare both of them, you can clearly see which one is looking neat and clean. The same information, but it is easy for us to read. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी पाई चार्ट बोले, सजेस्ट दिस सॉर्टेड बार चार्ट एंड लेट जस्ट ऑल्सो चेंज द चार्ट टाइटल. दिस इज माई क्वांटिटी और लेट जस्ट से सेल्स वॉल्यूम बाय रीजन एंड दिस इज वेरी डायनामिक. इफ आई चेंज दिस 1000 to 400, नाउ यू कैन सी दैट ये मेरा एशिया इज एट विच रैंक? फर्स्ट रैंक. I can also show the rank in here again, but for that I have to add the text boxes in here. तो आपको जैसे ही इसको मैनिपुलेट करना है, you can do that. So this is the way of creating the sorted bar chart. If you don't need the total, you can remove it. Now one more thing that I want to give you, because let's suppose if I move this chart away. Alright. So if you like this video, please like, share, subscribe and comment अगर आपको किसी specific topic पे Excel के या Power BI के वीडियो चाहिए. Thank you.